alumni are very important and definitely important for the other universities as well. So far as fund generation is concerned, so far as placement is concerned, and other things are concerned. And Sufyan Bhai very rigorously does all those things. So I think if you will visit the web page of the Engineering College of Aligarh Muslim University, it is Zakir Hussain Engineering College. So you will find his complete CV. It is just like a PhD thesis. I mean, it's very difficult for me to just sum it up in 2 or 3 minutes. It's very difficult for me. So with these words, in fact, I would like to hand over the session to Sufyan Bhai. And I would like to request all of you to please listen to him, and not only listen to him, since he has vast experiences. So if you have any query or any questions, or if you have any doubt or like that, so definitely Sufyan Bhai will give sufficient time for you to clarify those doubts. So with these words, I would like to hand over the session to our resource person, Professor Sufiyan Beg Sahab, Principal, Zakir Hussain College of Engineering and Technology, Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir, it's over to you. Okay. Thank you very much, Sajid Sahab, for introducing me. I'm just sharing my slides and then I'll get started. Yes, sir. Yes, sir. जी दिख रही है सुफियान भाई, स्लाइड दिख रही है आपकी? हाँ, स्लाइड शो में आ गया ना? Yeah, sure. We can see it. We can see it, sir. Moving also, right? Yeah, sure, sir. Okay, fine. Okay, dear participants, it is a privilege to talk to you all this morning. It's a rainy morning here in Aligarh, so the weather is nice, and hope you all are also enjoying weather at your respective places. So today, in this cool weather, I'm going to take up a hot topic, which is outcome-based education and quality assurance. So we are going to look into how outcome-based education is going to assure quality for us in education. As has already been introduced by Professor Sajid Saab, I am principal of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology at the Aligarh Muslim University, Aligarh. Now let me begin by throwing a question to all of you for pondering over the point, can we quantify quality? Because at the back of our minds, we all have this notion that quantity and quality are two contradictory terms. If you talk about quality, you shouldn't be talking about quantity. If you're talking about quantity, you shouldn't be talking about quality. I'm going to put a statement before you that will connect quantity and quality. And that statement is, what you can't measure, you can't control. जो चीज measure नहीं की जा सकती, वो control भी नहीं की जा सकती. For example, if you can't measure temperature, you can't control temperature. If you can't measure speed, you won't be able to control speed. Suppose you're driving on a highway. If you don't look at the speedometer, there is no way that you can control your speed, because you won't get to know even if you're driving at 100 kilometers per hour or 120 kilometers per hour or beyond. Highway पे चल रहे हैं, पेड़ सब पीछे तेजी से भाग रहे हैं, जमीन नीचे से जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड का अंदाजा तब तक नहीं कर सकते unless and until you look at the speedometer, right? So which shows that if you can't measure speed, you won't be able to control speed. Let me bring before you an accident that happened a few years back. That is the tragic accident, but we have to take a lesson from it. A few years back, you might be able to recall, there was this Air France flight which, while flying from a South American country to Paris, crashed into the Atlantic Ocean. Everybody on board perished. Very sad, very tragic. But there is a lesson for us. When people started investigating the cause of the crash and they dug out the human remains from the depth of the ocean, to their shock, they found that the bones of every human body was broken. This was something very surprising, very shocking.
because the plane have plunged into the ocean, everybody had drowned. By drowning, how can their bones be broken? When they kept on investigating, they came to the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad. The plane oversped to the extent that it broke into two. अब उस हाइट पे तो प्लेन की स्पीड और भी पता नहीं लग पाएगी, जब हाईवे पे ड्राइव करने से नहीं पता लग पाती, जबकि आप जमीन पे होते हैं, हवा में उड़ रहे हो, तो और भी पता नहीं लगेगा. आप फ्लाइट लीजिए, लगेगा आपका, अगर टर्बुलेंस नहीं है तो लगेगा आपका प्लेन रुका हुआ है, राइट. या नीचे भी अगर आप देखेंगे क्लाउड नहीं है, तब भी लगेगा बहुत स्लो मूव कर रहा है. So the plane oversped because the speed sensor had gone bad and it broke into two. And because of the air pressure, even at that height, the bones of the human beings were broken before they drowned in the ocean. Very tragic. But we have a lesson. What if we can't measure speed, we won't be able to control it. इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, इफ वी कांट मेजर क्वालिटी, वी वोंट बी एबल टू कंट्रोल क्वालिटी ईदर. तो कंट्रोल करना पड़ेगा क्वालिटी को, उसके लिए हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा क्वालिटी को. सो द बॉटम लाइन रिमेन्स, assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. Obviously, if you talk about quality control, nobody would like the quality to deteriorate. You will like only it to be enhanced. Okay? So somehow or the other, we'll have to quantify the quality in education. What are the levels of quality in education? First and the foremost is approval, where you have the bare minimum infrastructure in place. Like you have the classrooms in place, you have the labs, you have the teachers, you have the library, you get the approval. For example, technical education, approval is provided by All India Council for Technical Education, and likewise for other professional bodies. From approval, you graduate to the quality check. One of the measures is ISO. आपने सुना होगा ISO certification. Just as ISO certification comes for the products, it comes for the services also. So there is ISO for education, educational services as well. International Organization for Standardization. Now they start talking about the teaching aids available in the classroom or not. Is it a smart classroom? What is the qualification of teachers? Are the equipment in the labs the latest ones? Do you have latest editions of books in the library, and so on? So they start talking about quality. Is that enough? There is one thing called accreditation, which not only provides you with the essential quality check, but also it brings in the mutual recognition. देखिए, मैंने अपने प्रोग्राम का, अपनी डिग्री का ISO सर्टिफिकेशन करवा लिया अपने कॉलेज में. If a graduate from this college takes that ISO certified degree to another institute, the other institute may accept it, may not accept it. They are not duty bound to accept the ISO certification. But the accreditation has to be necessarily accepted by other institutes. Why I'm saying this? Because accreditation happens under an agreement, under an accord, in which the signatory countries agree that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective boards. जितनी कंट्रीज ने साइन किया है, उन सब ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया है कि हम लोग एक दूसरे के बोर्ड की एक्रेडिटेशन दी हुई डिग्री को रिकॉग्नाइज करेंगे. अब साइन कर दिया तो उसके अंदर पावर आ गई, एक्रेडिटेशन के अंदर पावर आ गई. Let me bring in a point here. All of you must be young faculty members. So for your knowledge, if you don't know already, but if you know, still to assert, please pay attention to what I am going to say next. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. I am repeating.
In India, no university can become a university unless passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian Parliament, that becomes a central university. If it happens to be an act of the state assembly, then it becomes a state university. You know? So now you know the difference between central university and state university. It is not about funding, कि funding कहाँ से आ रही है. भाई बहुत से तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, फंडिंग कहीं से नहीं आ रही, वो कैसे क्लासिफाई होंगी स्टेट या सेंटर में. इट इज बेसिकली द लॉ दैट मेक्स दैट यूनिवर्सिटी, राइट. ये तो हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटीज का मिलके एक कंबाइंड लॉ बना हो, बट देयर हैज टू बी अ लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी बोथ एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल. ठीक है. तो अब सबसे ऊपर वो एक्ट होगा जो पार्लियामेंट ने पास किया किसी यूनिवर्सिटी के लिए. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का AMU एक्ट है. Likewise, we may have BHU Act, JNU Act. There could be some combined Central Universities Act also under which 2, 3, 4, 10 universities may operate. Right? इसी तरह state university, there has to be an act by the state assembly. ठीक है. अब एक्ट तो होगा एक कंसाइज डॉक्यूमेंट, प्रिसाइज डॉक्यूमेंट. एक्ट के नीचे होंगे स्टैट्यूट्स, फिर होंगे ऑर्डिनेंस, then you will have regulations. So power is percolating downwards. Act is providing power to statutes. Act कहेगा this may be seen as described in the statutes. तो अब statutes में power आ गई. Statutes further ordinance को power pass on करेगा कि this the explanation may be found as stated in the ordinance. Likewise, ordinance will be explained further in regulations. Ordinance और regulations दो तरह के हो सकते हैं, administrative भी और academic भी. So the point I'm trying to make is that the power is percolating downwards. Now, if there is a vice chancellor of a university, he draws power from the acts and statutes. If he appoints somebody as the pro vice chancellor or the dean or the head of the department or the proctor, they get the power from the vice chancellor, who in turn gets the power from the acts and statutes. So ye power, if they are taking any decision, that decision is tenable in the court of law because the power has been delegated, power has been passed on. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह एक्रेडिटेशन के अंदर पावर आती है उस एग्रीमेंट से जिसके अंडर एक्रेडिटेशन किया जा रहा है ना. सो दैट इज व्हाई एक्रेडिटेशन इज अ नॉच अबव ISO. अब जाहिर है एक्रेडिटेशन मिलने के लिए कुछ एक क्वालिटी चेक तो होना ही होगा. सो क्वालिटी चेक प्लस म्यूचुअल रिकॉग्निशन. आई विल एम्फसाइज दिस पॉइंट मोर व्हेन आई टॉक अबाउट दोज अकॉर्ड्स. अभी तो हमारे यहाँ देखिए दो बॉडीज आपने सुनी होंगी, एक NAC है, एक NBA. ब्रॉडली देयर मे बी अदर बॉडीज आल्सो. NAC प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूट वाइड एक्रेडिटेशन. The institute gets the accreditation, all the degrees awarded by that institution gets the accreditation. NBA provides degree specific accreditation. If the accreditation is given to BTech in computer science, it stays with BTech in computer science. You can't stretch it to BTech in IT. Or for that matter, you can't even stretch it to MTech in computer science. तो बहुत डिग्री स्पेसिफिक है NBA. NAC is institute wide. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. NAC में ये है कि अगर इंस्टीट्यूट को मिल गया सारी डिग्रीज को मिल गया. NBA says that no, only the stronger degrees will get it and the weaker degrees should not drag down the stronger degrees. है ना. तो हम डिग्रीज को क्लब नहीं करेंगे, अलग अलग हम डिग्रीज को ट्रीट करेंगे. तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं. Now let me move on to the definition of accreditation. Let me also tell you that this is one of the many definitions that you may see for the word accreditation. You might be wondering कि definition तो unique होती है, फिर one of the many का क्या मतलब है. Let me remind you of the good old story that you must have heard in your childhood days. There were these blindfolded people who were asked to touch an elephant and describe it. So the person who touched the trunk of the elephant
He said it's like a python. Somebody who touched the legs of the elephant, he said it's like a tree trunk. The person who touched the tummy of the elephant, he said it's like a wall. The person who touched the ears of the elephant, he said it's like a hand fan. So the same animal being described by different people differently. So if something is very diverse, there could be many ways to describe it. This is one of the ways, and I like it, so that is why I'm sharing with you. So what is the definition of accreditation according to my preference? It is formal recognition of an educational program or institution, as the case may be. Program in the case of NBA, and institution in the case of NAC, by an external agency. मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है. On the basis of impartial assessment, फिर impartial को किया है, of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. Well-defined criteria को अंडरलाइन किया. तो इस अंडरलाइंड टर्म्स के बारे में हमें समझ लें, हमें समझ लेना चाहिए. पहली बात तो ये कि इट हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी. आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनल एजेंसी से हम करा लेंगे, इंटरनली कर लेंगे और हम इम्पार्शियल रहेंगे. नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ये बिल्कुल इसी तरह की बात हो गई कि कोई एक्सपर्ट सिलेक्शन कमेटी में हो और वो कहे मेरा भाई अपीयर हो रहा है, मुझे बैठने दीजिए, मैं बिल्कुल फेयर रहूंगा, इम्पार्शियल रहूंगा. नहीं, वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा बैठने के लिए, चाहे वो जितनी कस्में खाए कि मैं फेयर रहूंगा, बिकॉज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. तो एक्सटर्नल एजेंसी होना जरूरी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और असेसमेंट भी इम्पार्शियल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंसी की तो इम्पार्शियलिटी बिकम्स गारंटीड. नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी भी जरूरी है और इम्पार्शियल होना भी जरूरी है. आप कहें हम इम्पार्शियल रहेंगे, इंटरनल एजेंसी, नो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आप कहें एक्सटर्नल एजेंसी कर लेंगे हम, वो पार्शियल इम्पार्शियल है, दैट इज नॉट आवर हेडेक. नो, यू हैव टू इंश्योर. अच्छा, इम्पार्शियलिटी का एक और नोशन भी है. आपने दो वर्ड सुने होंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, है ना. We teachers and students have a very narrow perception of subjectivity and objectivity in our minds. When somebody says objective, immediately MCQ, fill in the blanks, true, false comes to our mind. Subjectivity, essay type. गलत नहीं है, ठीक है, but that's a very narrow definition, very narrow perception of subjectivity and objective. Objective वो होता है कि you change the evaluator, the marks will remain the same, है ना. मिस्टर एक्स चेक करे या मिस वाई चेक करे या मिसेस जेड चेक करे, इफ इट इज ट्रू इट इज ट्रू 1, इफ इट इज फॉल्स इट इज फॉल्स 0. सब्जेक्टिविटी में इट मे वेरी. द सेम ऐसे में बी गिवन 8.5 आउट ऑफ 10 बाय मिस्टर एक्स, 9 आउट ऑफ 10 बाय मिस वाई, एंड मे बी 8 आउट ऑफ 10 बाय मिसेस जेड. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इम्पार्शियल का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. टीम बदल दी तो स्कोर बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो एक्सटर्नल एजेंसी, इम्पार्शियल असेसमेंट और वेल डिफाइंड क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया हैज टू बी वेल डिफाइंड. यू डिसाइड द रूल ऑफ द गेम बिफोर द गेम बिगिंस. यू डोंट चेंज द रूल्स आफ्टर द गेम हैज स्टार्टेड. बाद में आप गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते. There has to be a well-defined criteria and that should be known to all the stakeholders. सबको बता दीजिए कि इस पैरामीटर्स पे हम आपको इवैल्यूएट करेंगे एंड लेट देम प्रिपेयर. हम लोग की प्रॉब्लम टीचर्स की क्या होती है ना, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं हमारी जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए. वी टीच द चिल्ड्रन टू पेनलाइज देम. नंबर काटने के लिए पढ़ाते हैं, नंबर देने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, है ना. अब जैसे इन्विजिलेशन कर रहे हैं, हमें लग जाता है थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, यू कैन गेट टू नो हु आर द ट्रबल मेकर्स इन द रूम. अब क्या तरीका होना चाहिए, आप उनके आसपास रहिए, उनको चीटिंग करने मत दीजिए, अनफेयर मींस यूज मत करने दीजिए. हम यूज करने देते हैं, फिर उसके बाद उनको पकड़ते हैं, फिर उनको पेनलाइज करते हैं. दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ रॉन्ग अप्रोच. आप पहले से अनाउंस कर दिए भाई कोई गड़बड़ नहीं करेगा, जो गड़बड़ करेगा उसको सजा दी जाएगी, है ना.
या आपने देखा होगा सीसीटीवी जहां कहीं, तो उसमें लिख दिया जाता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। पर्पस जो है क्राइम को प्रिवेंट करना है, क्रिमिनल को पकड़ना पर्पस नहीं है। पर्पस इज टू प्रिवेंट द क्राइम। आई वॉज विजिटिंग वन ऑफ माई friends in the United Kingdom. So we were driving in a car. All of a sudden, the car started beeping. मैंने कहा बीप काहे की है? तो उसने कहा एक्चुअली देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन माय कार कि कोई आसपास पुलिस वैन होती है तो इट स्टार्ट्स बीपिंग। मैंने कहा ये तो अनफेयर होगा, सही नहीं है, इलीगल है। उसने कहा नो नो नो, दिस इज वेरी मच लीगल। द पुलिस वांट्स us to know that they are around. If somebody violates the rules, then they will catch him. So let the rules be known to everybody. Once I went to the Delhi airport to pick up a person. He was an elderly person. तो मैंने सोचा ज्यादा अंदर तक जाकर जहां तक जा सकता हूँ, I should drive my car and pick him up so that he has the least trouble. So there was this policeman sitting. So I drove in front of him slowly. तो उसको रोकना होगा रोकेगा, उसने नहीं रोका, मैं चला गया। जब उनको पिक करके वापस आना था तब रोका उसने, आप अंदर क्यों गए? तो मैंने कहा अभी जो तुम्हारे सामने से गया हूं, क्योंकि अंदर जाना मना है, वर्जित है। I told him if it is not allowed to drive beyond this point, you should have stopped me when I was going in. You know what he said? He said अगर उस वक्त रोक लेता तो इस वक्त आपको पकड़ता कैसे? So the purpose of the policeman is to catch the culprit, not to stop the crime. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना है। हमारा पर्पस ये है कि हम क्वालिटी बता दी कि ये आपको करना है और आप करिए और हम आपका एक्रेडिटेशन दें। ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे और हम आपका एक्रेडिटेशन रोकेंगे। ठीक है। सो की पॉइंट्स हमारे हुए, एक्सटर्नल एजेंसी, इम्पार्शियल असेसमेंट और वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। सो फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन as the case may be by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. Accreditation in India, as I just now said, institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAC), which is an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. Technical programs, National Board of Accreditation, diploma level to postgraduate level in engineering, management, architecture, pharmacy, hospitality, mass communication, and the list may go on. What is the significance of accreditation? At national level, it becomes easier for students and parents to select the institutions and program for admission. Simple है, accreditation है तो admission ले लो, क्योंकि ये डिग्री हर signatory countries में accept होगी। और नहीं है accreditation, then this is your choice. You may get accepted, you may not get accepted. Likewise, it helps employers in deciding about the institutions for recruitment. Accreditation है तो इसका मतलब quality check होगा, to go for the recruitment from such places. It helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. It happens that all are accredited. Please mute yourself. Please mute. Whosoever has unmuted, please mute. Admin, can you please mute this person? Admin, are you around? Okay. So it helps institutions to avail the benefits. So all our BTech degrees were accredited. So we could get a hefty funding of 15 crores from World Bank for what is called TechIP2, Technical Education Quality Improvement. उनकी requirement ही ये थी कि आपके पास accreditation होना चाहिए आपकी degrees का. Then we got the third phase, 7.7 crores more, because deliverable था कि you have to have the accreditation. या तो आपके पास हो या आप कराइए accreditation. One of the deliverables was like this. So that is about finances, funding agencies, regulatory benefits. You must have heard about grade 1 autonomy by UGC, grade 2 autonomy, grade 3.
3.5 से ऊपर स्कोर है तो ग्रेड 1 ऑटोनॉमी, 3.25 से ऊपर है तो ग्रेड 2 ऑटोनॉमी, 3 से ऊपर है तो ग्रेड 3 on the certain privileges. So all those, they depend on the accreditation. It also helps institutions in deciding about transfer of students or exchange of students from other institutions. Simple है, दो institutions हैं, दोनों accreditation मिला हुआ है, दोनों की डिग्री को, तो आसान है, सीमलेस ट्रांजिशन कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए. अब एक इंस्टीट्यूशन को तो मिला हुआ है, दूसरे को नहीं मिला हुआ है, तो अब सारा झंझट है. Do the equivalence check whether the degrees are equivalent or not, are the same courses being taught and so on. तो ये तो फायदे हुए नेशनल लेवल के. एट इंटरनेशनल लेवल, the mobility of students for pursuing either higher studies or employment in other countries. कैसे? This I'm going to talk about in the next slide. But both these things become seamless. Pursuing higher studies and employment from other countries, that becomes seamless because of accreditation. So let me emphasize about global mobility. There are multinational accords for mutual recognition of accrediting process and thereby recognizing the accreditation. For example, Washington Accord signed in 1989 for engineering degree program. Sydney Accord in 2001 for engineering diploma polytechnic program. Dublin Accord in 2002 for engineering technician program. Seoul Accord in 2008 for professional engineers in computing and IT related fields. अब इसमें से एक की बात करें, Washington Accord. This was an accord signed among 6 countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK and US in the year 1989. 6 कंट्री शुरू में थी. क्या मतलब है इसका? If a degree is provided accreditation by the Ireland Board of Accreditation, that degree will have to be necessarily acceptable in Australia, Canada, New Zealand, UK, US. कोई डिग्री न्यूजीलैंड का बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन देता है किसी डिग्री को, तो दैट विल हैव टू बी नेसेसरली एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएस. दिस इज द पावर दैट इज percolated to accreditation because of the Washington Accord. The purpose was to mutually recognize and accept the qualifications accredited by signatories. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. The list may keep adding or deleting. आप सोच रहे होंगे भाई एडिशन तो समझ में आता है, डिलीशन कैसे हो जाएगा? देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल, यूक्रेन हैपेंस टू बी अ पार्ट ऑफ एन अकॉर्ड, but a war breaks out there. They can't accept students from other countries, so they will withdraw from the accord. कि भाई ठीक है, हम आपकी डिग्री को नहीं मानेंगे, आप हमारी डिग्री मत मानो. So they may withdraw. तो इस तरह नंबर्स कभी कभी अनफोर्सीन या अनफॉर्चुनेट केसेस में कम भी हो जाते हैं सिग्नेटरी कंट्रीज के. Members of Washington Accord have outcome-based accreditation. तो outcome-based education draws power from this Washington Accord. इसीलिए outcome-based education के बारे में पढ़ना जरूरी है. NAC also is talking about the outcome-based education. तो outcome-based education इसलिए हमें समझना पढ़ना जरूरी हो गया, because the power is being given by accords. These are the signatories of Washington Accord. As I said, the number may keep increasing, decreasing. India भी add हो गया Washington Accord में. अब चलें आगे. What are the different accreditation models? देखिए, पहला मॉडल है मिनिमल मॉडल, which does not encourage continuous improvement. डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है. We are not futuristic. We see what is the situation today. For example, if we have to construct a bridge, we will see the traffic condition as of today, and accordingly we will design the bridge. By the time the bridge gets completed, the traffic has already exceeded the design. It has already fallen short. What do they do in developed countries? They will extrapolate the traffic data to next 15 years. आज से 15 साल बाद इस bridge पर कितना traffic expected है. Accordingly, they design the bridge. And after 15 years, they sit down to evaluate whether the traffic has reached the limit or not. If
In case it hasn't reached, they may extend the expiry of the bridge for another 5 years. 5 साल बाद फिर देख लेंगे. और अगर exceed कर गई, so they will bring down the bridge and they will design it afresh because its money has already been वो उसका पैसा वसूल हो चुका है, right? So the money has been realized. All the cost has been realized. So we have to have futuristic. ये नहीं कि आज अच्छा है तो कर दो. अरे आप आइंदा कैसा करने का प्लान बना रहे हैं, इसको भी इवैल्यूएट करना जरूरी है. So input output model is the next, where you see what quality of students are being admitted and what quality of students are graduating. फिर जो outcome model है, that talks about just the outcome. Suppose there is a farmer who is given the most fertile piece of land, the best seeds, the best fertilizers, ample amount of water, but the crop is not up to the mark. So input तो बहुत अच्छा था, but the output is not up to the mark. So there's something fundamentally wrong. Things are not gelling well. What ultimately matters to a farmer? It is the yield, the crop, which ultimately matters to the farmer. इसी तरह किसी भी educational institution की quality that can be gauged by looking at the quality of graduates. What is the outcome? Obviously, to have a good outcome, you have to have a reasonably good input as well. बहुत खराब स्टूडेंट्स आप दे देंगे तो अच्छा आउटपुट तो नहीं मिल पाएगा, फिर तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली सिचुएशन हो जाएगी, है ना. तो हमारा जो मेजरिंग पॉइंट है, दैट शुड बी द आउटपुट, राइट. नाउ व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन? स्टार्टिंग विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू, देन ऑर्गेनाइजिंग द curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. You set the goal first, you set the bar first. कोई एथलीट है, हाई जंप करनी है, so he or she sets the bar first and then stretches himself or herself to cross that bar. कोई वेट लिफ्टर है, वो पहले वेट उसमें लगाएगा बार में and then he'll assert to lift that weight. ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं कूद जाऊं फिर आप मेजर कर लीजिएगा कितना कूदा, या पहले मैं लिफ्ट कर लूं फिर आप देखिएगा. नो, दे सेट द गोल फर्स्ट, है ना. हाँ, कूद लिए तो आप कहेंगे बार और ऊपर कर दो, फिर और ऊपर कर दो, जहां तक आप जा सकेंगे, स्ट्रेच कर सकेंगे, वो आपकी लिमिट मानी जाएगी. वेट लिफ्टर है, वो जितना वेट उठा पाएगा कहेगा और ऐड करो और ऐड करो, जहां तक जा सकेगा वो उसकी लिमिट मानी जाएगी. So in education also you have to set the goal first, starting with a clear picture of what is important for students to be able to do. अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल्स तो मैंने सारी दी एथलेटिक्स की, वेट लिफ्टिंग की और हाई जंप की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. एजुकेशन की भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए. एनी गुड बुक, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी चैप्टर the author will enumerate, these are the points that you must expect to learn from this chapter. शुरू में बताने का क्या फायदा होता है? You are extra cautious. Whenever you come across that topic, you immediately get extra attentive. अरे अरे अरे, ये तो सीखना था मुझे इस चैप्टर में. At the end of the chapter, in the summary, he again lists, these are the points that you must have learned in this chapter. अब आप यहाँ पर assess करते हैं कि आपने सीखा नहीं सीखा. नहीं सीखा तो फिर आप चैप्टर दोबारा से you start all over again, right? तो इसी तरह आउटकम बेस्ड एजुकेशन में यू सेट द गोल फर्स्ट, और फिर 3 काम करने हैं. उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेच करना है, उसमें एक चीज है करिकुलम ऐसा डिजाइन करना है कि गोल पे पहुंच जाए, डिलीवरी ऑफ द कोर्स ऐसा करना है, और इवैल्यूएशन ऐसा करना है, एग्जामिनेशन ऐसा करना है बच्चों का कि वो सीख जाएं. बात करेंगे आगे, एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे आगे, है ना. तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है. पिक्टोरियली हम कह सकते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू. देन आउटकम बेस्ड करिकुलम, आउटकम बेस्ड लर्निंग टीचिंग टू मेक द स्टूडेंट अचीव द आउटकम, है ना. फिर आउटकम बेस्ड एजुकेशन टू मेजर व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड. तो ये है आउटकम बेस्ड एजुकेशन शुड लीड टू आउटकम बेस्ड करिकुलम, आउटकम बेस्ड लर्निंग टीचिंग, आउटकम बेस्ड असेसमेंट.
ये हमारे एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन की। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है जिसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। दिस इज द pyramid of outcome based education. At the top is vision. मैं सारे पॉइंट्स में अभी डिस्क्राइब करूंगा, एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा, जस्ट कीप अप विद मी। At the top you have vision, below it you have mission, then you have program educational objectives, then you have program outcome, and then you have course outcome. Program outcomes are aligned with the graduate attributes, है ना, ये graduate attributes से align होता है। पहली चीज तो नोट करने की ये है, द डिजाइन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या मतलब है? सबसे पहले विजन सेट करना पड़ेगा, फिर मिशन सेट करना पड़ेगा, देन पीईओज, देन पीओज, देन सीओज। असेसमेंट के वक्त इट गोज फ्रॉम बॉटम टू अप। First, the COs have to be evaluated, then POs have to be evaluated, then program educational objectives, then mission, then vision. विजन मिशन जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल है। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम आउटकम्स, दे आर एट द प्रोग्राम लेवल। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, ये एमए इन हिस्ट्री है, या एमएससी इन ज़ूलॉजी है, प्रोग्राम लेवल चीजें हैं। और कोर्स आउटकम आर द क्वालिटीज दैट द स्टूडेंट शुड हैव एट द टाइम ऑफ पासिंग एवरी कोर्स इन एवरी सेमेस्टर ऑफ दैट प्रोग्राम, वो है कोर्स आउटकम्स। इसी तरह प्रोग्राम आउटकम वो क्वालिटीज दैट द स्टूडेंट शुड हैव एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, इसीलिए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से अलाइन है वो। फिर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोस क्वालिटीज व्हिच द स्टूडेंट ऑफ दैट प्रोग्राम शुड हैव 4-5 years after the graduation, after they have gone in the professional field, वो है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और विजन मिशन, दे आर द इंस्टीट्यूट लेवल थिंग्स। अब एक एक करके इनको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली चीज है विजन मिशन। In order to understand what is vision, let me tell you a story. When I was a student of BTech myself, we had a professor of mechanical engineering who had an old Fiat car at that time. उस पर दो ही कारें इंडिया में होती थी, एक फिएट या एम्बेसडर। तो तीसरी कोई कार होती थी, that was supposed to be an imported car. So he had an old Fiat car. Now just imagine, at the back of an old Fiat car, there was a sticker which read, when I grow up, I want to be a Rolls Royce. Sounds funny. पुरानी फिएट कार के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, when I grow up, I want to be a Rolls Royce. But that is a very good example of what the vision is. What you want to become when you grow. How do you want to grow? That is what is the vision. है ना? फिर इस विजन को मीट करने के लिए मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना? These are the shorter goals to achieve vision. एग्जाम्पल दें, जैसे अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो, तो देयर इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. Even if you haven't studied operating systems in computer science, still from the very name you can find out that long-term scheduling is vision and short-term scheduling is mission. Suppose there is a player who wants to become the number one player in the whole world. That is his or her vision. Now, in order to reach that vision, he or she will decide how many runs do I have to score in this series, how many catches I have to hold, how many wickets I have to take. So match by match, series by series, जैसे जैसे अपने mission statements पूरा करता रहेगा, a day would come when he or she will become the number one player. है ना? तो mission are the shorter goals to achieve vision. अब ये विजन मिशन आएगा कहां से? कोई आसमान से तो उतरेगा नहीं, या आप सो गए, ड्रीम में आ गया आपका ये विजन हो और ये मिशन. अच्छा, मान लीजिए आ भी गया ड्रीम में. सपोज यू सी इन योर ड्रीम दैट दिस शुड बी द विजन एंड मिशन ऑफ योर इंस्टीट्यूट. डोंट यूज इट. व्हाई? बिकॉज नोबडी विल हेल्प यू टू अचीव दैट विजन. वो आपका पर्सनल विजन है.
वो विजन जो आप अचीव कर सकें, दैट हैज टू बी प्रोसेस्ड इन अ प्रॉपर वे। तो क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर डिपार्टमेंट विजन मिशन बनाना है तो पहली बात तो यह है कि उसको इंस्टीट्यूट विजन और मिशन से अलाइन करना पड़ेगा। अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि आप हमें डिपार्टमेंट विजन मिशन क्यों बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट विजन मिशन कौन बनाएगा? ट्रू। Why I'm doing this? Because you're all young faculty members. Right now, you must be worried about the department vision mission. A day would come when you will become principals, directors, vice chancellors yourself. Then you will be worried about institute vision mission. तब क्या करेंगे? Then you will have to align the institute vision mission by the founders vision mission. जो भी फाउंडर है, पर्सन फाउंडर है या कोई ट्रस्ट फाउंडर है, उसके विजन मिशन से अलाइन करके आपको इंस्टीट्यूट विजन मिशन बनाना पड़ेगा। प्रोसेस यही रहेगा, है ना? तो ये तो बात हुई कि अलाइनमेंट कहां से करना है, क्यों करना है, व्हाई द अलाइनमेंट। लेट मी टेल यू अ जोक। देयर वर दीस फोर फ्रेंड्स who thought to pull up money and buy a car to run as a taxi. So they pulled up money, bought a car. The first day nobody hired their car, hired their taxi. भाई क्यों 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 नहीं हायर हुई आपकी टैक्सी? पता लगा all four of them kept sitting inside the car the whole day. वो खुद ही बैठे रहे अंदर। तो nobody saw the taxi unoccupied, so nobody hired it. उनको समझाया गया भाई तुम लोग तो बाहर निकलो, टैक्सी खाली दिखेगी तभी तो लोग उसको हायर करेंगे। Next day they did come out of the taxi, but the car did not move. The whole day all four of them kept pushing the car, but the car did not start. क्यों भाई, क्या हो गया? कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? पता लगा कि उनमें से, उन चार में से दो आगे से पीछे धक्का लगा रहे थे और दो पीछे से आगे धक्का लगा रहे थे। हाउ विल द कार मूव? ऑल फोर ऑफ देम शुड हैव पुश्ड इन द सेम डायरेक्शन। पांचों अगर एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, चारों अगर एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो कार मूव करती, है ना? इसीलिए इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करके डिपार्टमेंट विजन मिशन बनाना है। अगर एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कैसे काम बनेगा? बोथ ऑफ देम हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन, देन द कार ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट विल मूव, है ना? तो पहली बात तो ये हुई अलाइनमेंट की। उसके बाद यू डू अ कंसल्टेशन प्रोसेस, consult the faculty, the industry, the management. You look at the data on future so that it doesn't remain and just the basic model. Professional bodies को देखिए वो क्या चाह रही हैं, पेरेंट से पूछिए। कंसल्टेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि all those people who you consulted will help you in realizing that vision mission. आप कंसल्टेशन नहीं करेंगे, they'll also say हमारा विजन मिशन थोड़ी है, वो जाने जिन्होंने बनाया है। But if they are involved, even if you don't accept their opinion, you just took their opinion, they will feel involved and they will join hands with you. अच्छा, एक बार में नहीं बनेगा, उसको आपको फिर रिव्यू करना पड़ेगा। वर्जन 1.0 बनाया, if there is a substantial review, make it 2.0, और अगर थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस है तो make it 2.1, है ना? तो इस तरह से टेक 1 इटरेशन, 2 इटरेशन, 3 इटरेशन, फाइनली जब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, प्रोफेशनल बॉडीज, पेरेंट्स, इनका कंसेंसस बन जाए, सो दैट विल बी योर विजन मिशन। ठीक है? कंसेंसस बनाने का भी तरीका होता है, ये लीडरशिप टॉक्स में बाद में पढ़ाया जाता है कि भाई कंसेंसस कैसे बनाया जाए अमंग्स द मैसेस, what all measures have to be taken. चलिए वो अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं because we'll fall short of time then. तो ये इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करके आप इस प्रोसेस को फॉलो करके यू कैन मेक द विजन एंड मिशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सिंस आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, आई हैड टू फॉर्म द विजन एंड मिशन ऑफ द कॉलेज, ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो आई पुट इट इन लाइन विद द विजन ऑफ द फाउंडर, सर सैयद अहमद खान, founder of our university. The Zakir Hussain College of Engineering College always stood for peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper. ये विजन था फाउंडर का।
तो अब हमने अपने कॉलेज का विजन प्रोसेस फॉलो करते हुए क्या बनाया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आल्सो टेक द सेम विजन। वही बात है कि सेम विजन लेने से तो वो ड्रीम में आ गया है ना, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग एज अ विजन, इट हैज टू बी रियलाइज द हार्ड वे। अब हमारा क्या बना, टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। देखिए एक्सीलेंस हमने यहां से लिया, इन साइंटिफिक, साइंटिफिक यहां से लिया, और उसमें सिंस वी आर द इंजीनियरिंग कॉलेज वी एडेड टेक्निकल एजुकेशन and research with the standards at par with national and national institutes of repute and to serve as quality human resource provider। ये peaceful coexistence लिया है ना, हमने सिर्फ क्वालिटी रिसोर्स प्रोवाइडर नहीं कहा, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर, पीपल विद द ह्यूमन टच टू द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, है ना, दिस इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये हमारा विजन बना इसी प्रोसेस को फॉलो करके। अब मिशन स्टेटमेंट्स, टू अचीव द विजन, to offer state-of-the-art UG, PG, and doctoral programs, to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure so as to produce the leaders and innovators of tomorrow, to produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind, to undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry. And last but not the least, to be among top 10 engineering institutes of India। ये हमारे मिशन स्टेटमेंट्स हैं। जैसे जैसे मिशन स्टेटमेंट्स अचीव होंगे, we'll keep inching closer and closer to our vision। ठीक, तो ये दो चीजें कवर हुई, उस पिरामिड की दो चीजें कवर हो गए, है ना, विजन मिशन, दो चीजें कवर हो गई। अब दो चीजें उसके बाद वाली, ये दोनों इंस्टीट्यूट लेवल थी, दैट वी हैव कवर्ड। अब प्रोग्राम लेवल, PEOs and POs। PEOs, program educational objectives, are the matured graduates attribute, 4-5 years down the timeline after graduation। 4-5 साल बाद ग्रेजुएशन के उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन we didn't tell them how to become a good teacher, how to be a good businessman, how to be a good entrepreneur, how to be a good manager। Let them go out in the field, let them self develop themselves। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे अच्छे बिजनेसमैन बने, कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर, हाउ गुड अ मैनेजर और हाउ गुड अ टीचर दे हैव बिकम। तो ये PEOs हैं। PEOs के बाद आता है POs। They are the graduate, they are the qualities at the time of graduation। इसीलिए they are aligned with graduate attributes। ग्रेजुएशन के वक्त क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ग्रेजुएट्स में, that is PO। Graduate attributes are the generic qualities that the graduate of any discipline should have। When you adopt it for your program, that becomes program outcome। अब PEO और PO में फर्क समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। Let's talk about a fruit, say mango। A mango is ripe, PO achieved। फल पक गया, PO achieved। फल कैसा पका, अब वो मार्केट में जाएगा, people will buy it, then people will get to see how does it taste, how does it smell, how does it appear, है ना। तो अब ये क्या है, ये PEOs हैं, जो फील्ड में जाने के बाद पता लगी क्वालिटीज, है ना, वो PEOs हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो POs एंड PEOs। अब ये कैसे अचीव होंगी, डिफाइनिंग ऑफ PEOs। देखिए इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन से अलाइन करके आपने डिपार्टमेंट विजन मिशन बनाया था, उससे अलाइन करके PEO बनाना है। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को देखना है, देन अ कंसल्टेशन प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड from the faculty, student, data on future, alumni, industry, professional bodies। Their views are collected by the program coordinator। Their views are summarized by program assessment committee and accepted or recommended for review by the department advisory board। एक इटरेशन, दो इटरेशन, जितनी जरूरत हो उतनी लीजिए। Finally, when it gets accepted by the department advisory board, that becomes the PEO of that program। तो ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी, डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि ये कंसल्टेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, जो एक्सेप्ट हुआ, शुड इट बी कार्व्ड इन स्टोन? नो, देयर हैज टू बी एन एक्सपायरी डेट फॉर इट।
जैसे आपने डेटा ऑन फ्यूचर लिया तो कितने दिन का लिया? 10 साल का लिया, तो 10 साल बाद we'll revisit this PEO to see if it is still valid. If it is valid, well and good, keep continuing for another 5 years, 10 years. If it is not, then you change it, you modify it, और अगर बिल्कुल रिप्लेस करने की जरूरत है तो रिप्लेस इट. सो इट इज अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, है ना. शुरू में बात की थी जो मिनिमल मॉडल है दैट डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. सो सर्कमवेंट दैट मिनिमल मॉडल वी हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक. अच्छा, अब पीओस को समझने से पहले ग्रेजुएट एट्रीब्यूट समझना पड़ेगा. पीईओस की तो बात हो गई. अब पीओस एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, व्हाट आर द क्वालिटीज? अब जैसे हमने तो इंजीनियरिंग के हिसाब से रखा हुआ, आप अपना चेंज कर लीजिए. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज नॉलेज, देन प्रॉब्लम एनालिसिस आनी चाहिए ग्रेजुएशन के वक्त तक. डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, दे शुड बी केपेबल ऑफ. इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये नहीं कि जो बस क्लास में कराई वही कर पा रहे, कोई नई प्रॉब्लम आई तब. दे शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ टू टेक अप एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कम्स देयर वे. फिर मॉडर्न टूल यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जमीन खोदनी और आज भी हम फावड़ा खुरपी लेके खड़े होंगे, so the people who have got latest gadgets, they will win over us because they have a better start, they are more efficient. There was a vice chancellor in our university when we were students, he used to say that the time has come when if somebody doesn't know computer, he will be treated as illiterate. अगर उसी बात को मैं आज की डेट में आगे बढ़ाऊं तो आई कैन से दैट इफ यू डू नॉट नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर इलिटरेट. तो क्या मॉडर्न टूल यूज है? उस जमाने में कंप्यूटर वाज द मॉडर्न टूल, टुडे एआई इज द मॉडर्न टूल, व्हिच इन टर्न यूजेस कंप्यूटर, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव एडवांस्ड, है ना. तो मॉडर्न टूल यूसेज आना बहुत जरूरी है. फिर इंजीनियर एंड सोसाइटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. Let me throw a question before you. Have you ever wondered why Silicon Valley is Silicon Valley? My answer to this question is Silicon Valley is Silicon Valley because Stanford University and the University of California at Berkeley are there. These two giant universities have developed an ecosystem around them, which is called Silicon Valley. Their graduates created startups. Those startups became success stories. Then they started employing more graduates from these universities. They started funding. They even started employing the faculty members of these universities in their industry for a specific period of time. तो ये पूरा उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया अपने अराउंड, राइट. We have very good institutes in India. You talk about IITs, you talk about IIMs, central universities, NITs, but outside the four walls of the IIT or the IIM, a rickshaw puller or a tea seller or a hawker just doesn't know what this IIT IIM is all about. So the benefits of these institutes are not percolating down to society. So that is where we have failed as an engineer or an educationist. फिर नेक्स्ट क्या है? environment and sustainability. I have no hesitation in admitting that we engineers are the biggest culprit of destroying the environment because we overdo things. Sometimes out of enthusiasm, other times out of the lust for money. We overdo things. When we were young, this polythene came into market, everybody was overjoyed. अरे वंडर मटेरियल आ गया, इतना थिन है, इतना लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है और इंसुलेटर है, ये वो सब. We over produce plastic and polythene. Now we are crying hoax. वो तो साफ डिके नहीं हो रहा और हमारे समुंदर खराब हुए जा रहे हैं, हमारी जमीन खराब हुई जा रही. I read somewhere that we learn from history that we do not learn from history. Yes, we learn from history that we do not learn from history. हमने अभी अपना सबक फिर नहीं सीखा. Everybody today is talking about solar energy, green energy, और इतने सोलर पैनल्स हमने लगा लिए हैं बिना ये सोचे
कि after 15, 20 years, 25 years, when we will discard these solar panels, वो सारा वेस्ट कहाँ जाएगा, ई वेस्ट कहाँ जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोलर पैनल्स ना लगाइए, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ना कीजिए. What I'm saying is do it in a controlled way. पहले उस चीज का डिस्पोजल सोचिए, फिर उसको अडॉप्ट कीजिए, है ना. बी फ्यूचरिस्टिक, डोंट मेक इट अ मीनेस. What is a comfort today should not become a burden a few years down the line. So environment and sustainability is the responsibility of every graduate, should be the responsibility of every graduate. Ethics, you take the ethics out of an engineer and he will sell the whole country. Individual and teamwork, very important. अकेले भी काम कर सकें और टीम में हो, टीम में भी काम कर सके. ये नहीं तो हम टीम प्लेयर तो हैं साहब, इंडिविजुअल नहीं खेल पाते, या इंडिविजुअल तो खेल लेते हैं, टीम के साथ नहीं कर पाते. नो, दिस इज द पॉइंट विच गिव्स राइज टू कोलैबोरेशन. मेरा अलग से पूरा एक लेक्चर है कोलैबोरेशन का, कहीं यूट्यूब पे पड़ा होगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट हैव अ लुक एट इट. हाउ टू फॉर्म एंड सस्टेन कोलैबोरेशंस. You know, when was the first lesson on collaboration and teamwork given to us? When we were asked the question in mathematics, 4 आदमी ये काम 10 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी ये काम कितने दिन में. This is collaboration, the first lesson in collaboration. So we have to be an individual player as well as a team player. Communication बहुत important है. Communication, let me tell you, the only difference between modern systems of medicine and our traditional systems of medicine is the lack of communication in the latter. हमने हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसमें हमने कम्युनिकेट नहीं की चीजें. मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दे केप्ट ऑन कम्युनिकेटिंग, दे केप्ट ऑन एडवांसिंग, दे हैव रीच्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर डूइंग हार्ट ट्रांसप्लांट. इवन एनिमल का हार्ट निकाल के ह्यूमन बींग्स के लगा दे रहे हैं, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग. एक आदमी ने जिस लेवल तक किया उसने कम्युनिकेट कर दिया, अगले ने उसके बियॉन्ड स्टार्ट किया. इन आर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, चाहे वो हकीमी हो, यूनानी हो, या वेदा सिस्टम हो, आप उसमें देखिए, वो वैद साहब या हकीम साहब, ही डिड नॉट इवन टीच हिज सन. बहुत अच्छे होते थे, नफ्स पकड़ के बता देंगे क्या बीमारी है, नुस्खा लिखा देंगे, डिक्टेट कर देंगे, दिस इज द प्रेस्क्रिप्शन. लेकिन जब वो मरे तो अपनी सारी नॉलेज अपने साथ, या तो दे टुक इट इन द ग्रेव और दे टुक इट टू द शमशान घाट. Nobody benefited, everybody had to start from scratch. So that is why communication is very important. We keep communicating whatever we accomplish, whatever we do. The lifelong learning. Learning doesn't stop the day a student graduates. It has to be a lifelong thing. कोई MBBS करके कहे काम खत्म, कहा जाएगा नहीं भाई, काम तो अब शुरू होगा. You'll start practicing now. कोई BTech करके कहे काम खत्म, no, the work will start now. It has to be a lifelong thing. फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, दोनों चीजें बहुत, एवरीथिंग रन्स ऑन मनी. अगर आप उसको फाइनेंशियली वायबल नहीं बनाएंगे, सो इट विल नोज डाइव, इट वोंट टेक ऑफ. इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ब्रिज बनाना था, अब फ्लड के आने से पहले पहले बनाना ना, मैनेज करना है. अब नहीं कर पाए और फ्लड आ गया तो जो बना था वो भी बह जाएगा, खत्म, है ना. So these are 12 graduate attributes that you have to imbibe in every graduate at the time of graduation. तो इनसे हमारे POs बनते हैं. अब ये इन्हीं का डिस्क्रिप्शन है. आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड्स बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो अब आते हैं POs पे. POs are narrower statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. Guidelines for the POs. Program outcomes basically describe knowledge, skills, and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of graduation. They should not be too broad. They must align with graduate attributes. They must reflect all the graduate attributes. They should contribute to achieve PEOs. Upward compatibility भी होनी चाहिए ना. तो ये POs की गाइडलाइन हो गई. Process is very similar to that of, हेलो हेलो
You are audible. Yes, sir. You are audible. Sir, yes, audible, yes, sir. absolutely right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, So audible. process of defining Very POs interesting, Yes, very sir. interesting knowledge, sir. is very similar to that of PEOs. इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट विजन मिशन से अलाइन करके पीईओस बनाए थे, अब पीईओस से अलाइन करके विल फॉर्म पीओस. Same way, graduate attributes have to be taken into account, professional bodies have to be taken into account, the consultation process with faculty, student, data on future, alumni, industry. Views are to be collected by program coordinator, summarize those views by the program assessment committee, and accept or reviewed by the department advisory board. Finally, after 1, 2, 3 iterations, whatever is required, when advisory board finally accepts, these are the defined POs. Again, they don't have to be carved in stone. An expiry has to be decided. Data on future कब तक का लिया था हमने. So accordingly the expiry कि आज से 7 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद हम फिर इन POs को revisit करेंगे. We may continue as it is, or we may modify, or we may replace. ठीक है. एक नई टर्म आई है PSO, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. क्या फर्क है PO PSO में? There is one-to-one alignment of PO with GA, graduate attributes, और PO में तो 12 GAs हैं, 12 graduate attributes, so 12 program outcomes. PSOs are program specific outcomes which are lesser in number and specific to a program. Let me give you an example. Don't take it politically. Take it a hypothetical example. 3 universities: Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University. Suppose all 3 universities are teaching MA in history. POs of MA in history will be the same across all these 3 universities, but their PSOs may differ according to their focus. AMU might say that our PSO is medieval history. BHU may say our focus or our PSO is ancient history. JNU may say our PSO is modern history. So PSOs may vary according to the focus of that institution, but POs have to be same. कहीं पर BSc in chemistry पढ़ाया जा रहा है, तो BSc in chemistry के POs will be same across the institutions, but their PSOs may differ. Somewhere the PSO may be analytical chemistry, somewhere it could be physical chemistry, somewhere it could be organic chemistry, other places it could be inorganic. जो भी आपका specialization है, focus है, उससे आप कुछ lesser number PSOs may also be taken up in addition to the POs. ठीक. अब आखिरी चीज बची COs, है ना. सब कवर कर लिया हमने. विजन हो गया, मिशन हो गया, PEOs हो गए, POs हो गए. अब आखिरी है COs. क्या है? It should be student focused, not professor focused, which means learning oriented, not coverage oriented. ये नहीं कि हम क्या पढ़ा सकते हैं वो CO रखा, नहीं, स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, what is important for students to be able to do, वो होगा CO, है ना. बार वैसी सेट करनी जहां हमें पहुंचना है, जितना हम कर सकते हैं उतनी बार नहीं सेट करनी है. अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, ऊपर से नीचे पूरा अलाइन होना चाहिए. Focus on abilities central to the discipline. Let me again tell you a story. When I was doing PhD at IIT Delhi, there was this foreign diplomat visiting IIT Delhi. So he asked one of the professors of computer science, which programming language do you teach your students? बहुत genuine question है. But the answer given by the professor of computer science was an eye-opener for us. What did he say? He said, we don't teach them language, we teach them programming. बहुत फर्क है दोनों बात में. लैंग्वेज तो ये कि आपने आज पाइथन चल रही, आपने सिखा दी, भाई लैंग्वेज तो बदलती रहेगी. There was a time when there was basic, then Fortran came, COBOL was there, Pascal, C, C++, C Sharp, फिर जावा आ गई, पाइथन आ गई, कल को कोई और लैंग्वेज होगी. आपने लैंग्वेज सिखाई, तो जब लैंग्वेज चेंज हुई तो बच्चा आउट ऑफ मार्केट हो गया. आप उसको प्रोग्रामिंग सिखाइए, so that whatever language comes his way, he should be able to pick up the syntax. ठीक है. तो तो, 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 that should be the CO.
फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर, ये सिखाइए। आर लिमिटेड टू मैनेजेबल नंबर, इतने ज्यादा मत रख लीजिए कि साहब वो मैनेज नहीं हो पा रहे। बहुत आसान तरीका क्या है, इफ यू हैव अ यूनिट सिस्टम ऑफ सिलेबस, हर यूनिट का एक सीओ बना लीजिए, 4 यूनिट्स 4 सीओस, है ना। जो हर यूनिट का सेंट्रल आइडिया है वो एक सीओ बन गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेसिफिक एनफ टू बी मेजरेबल, डोंट मेक इट वेग कि मेजर ना हो पाए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टू ओबी। व्हाट यू कांट मेजर यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट, कंट्रोल कैसे करेंगे उसको, है ना। अब थोड़ा सा टेक्सोनॉमी लेवल की बात करनी पड़ेगी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने बनाई थी। हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं हम, डायरेक्ट टेक्सोनॉमी लेवल्स पर जाते हैं। फर्स्ट लेवल इज नॉलेज, उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन, ये होता है जानना, ये होता है समझना। फिर एप्लीकेशन, अप्लाई करना, है ना। नॉलेज आपने रट लिया, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, नॉलेज हो गई। कॉम्प्रिहेंशन, दुनिया गोल है से क्या मतलब है, इज इट सर्कुलर, इज इट elliptical, is it oval, is it flattened on the poles, what does it mean, वो कॉम्प्रिहेंशन हुआ। फिर एप्लीकेशन, इट रोटेट्स, इट रिवॉल्व्स, रोटेशन से दिन रात बनते हैं, रिवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं, तो जो कुछ जानते हैं उसको अप्लाई कर सकें। देन कम्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस। देखिए इन दोनों में डिफरेंस मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं। सपोज देयर इज अ सिस्टम, it could be a computer system, it could be electronic system, mechanical system, political system, social system, कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम का एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। If you know the input, you know the system, you have to find out the output, that is analysis. If you know the input, you know the output, you have to find out the system, that is synthesis, which is more challenging. Synthesis is more challenging. तो चैलेंज नीचे से ऊपर बढ़ रहा है ना, और सबसे ऊपर इवैल्यूएशन। तो these are the taxonomy levels: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation। फिर लोगों ने इसको रिविजिट किया, एंडरसन कारथवाल ने किया 2001 में। देखिए टू रिमेंबर तो वही बात हो गई, नॉलेज, टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन, टू अप्लाई एप्लीकेशन। एनालिसिस सिंथेसिस को उन्होंने एक में मर्ज कर दिया, और टू इवैल्यूएट वो रहा। फिर एक इन्होंने लेवल ऐड किया, टू क्रिएट। अब देखिए क्रिएशन में दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने का रास्ता पता नहीं था, वी डिडंट नो द राउट फ्रॉम ए टू बी, somebody found out a route, that is invention. The route was there, but somebody came up with a better route, that is innovation. ठीक है, जो चीज पता ही नहीं थी उसको निकालने का नाम, जो चीज थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसको निकालने का नाम इन्वेंशन है। और थी लेकिन बट फाइंडिंग आउट अ बेटर वे टू डू इट, दैट इज इनोवेशन। फिर एक चीज होती है डिस्कवरी। इन्वेंशन डिस्कवरी में क्या फर्क है? अगेन लेट मी टेल यू अ जोक। A child asked his father, Dad, what is the difference between invention and discovery? So the father said, Son, look, it is like this. I discovered your mom and then we invented you. I discovered your mom and then we invented you. Something which is already existing, उसको ढूंढने का नाम डिस्कवरी है। अंटार्कटिका डिस्कवर हुआ, इन्वेंट नहीं हुआ, वो तो क्रिएट कर दिया था, गॉड ने क्रिएट कर दिया, somebody discovered. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, he did not invent अमेरिका। ठीक है, तो इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, ऑल थ्री कम अंडर क्रिएट। तो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और फॉर दैट मैटर क्रिएट, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी हर स्टूडेंट में ये तीन लेवल तो आना जरूरी है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन ओनली द गुड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। या क्रिएशन, ये सब आपके फिर प्रोजेक्ट्स में होंगे, सेमिनार में होंगे, है ना, या थीसिस में होंगे, डिसर्टेशन में होंगे। बट नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन यू हैव टू इवैल्यूएट इन द एग्जाम्स। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मार्क्स,
उसके आगे लिखिए विच सीओ डज दिस क्वेश्चन बिलोंग टू एंड विच टेक्सोनॉमी लेवल डज इट बिलोंग टू। कुछ क्वेश्चंस नॉलेज के हों, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के हों, कुछ एप्लीकेशन के हों। एक आध क्वेश्चन एनालिसिस सिंथेसिस भी आप देना चाहें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, सो वेलकम। तो ये हो गई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो अब ओबी स्टेप्स क्या हुए? डिफाइन आउटकम्स, डिजाइन करिकुलम, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स एंड डिटरमिन एडवांसमेंट। ये सब तो हो गया मेजरमेंट। तो अब उसको व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, तो उसको इनहेंस भी तो कीजिए, तो डिटरमिन एडवांसमेंट्स। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपका मुझे ध्यान चाहिए, because in this slide I am going to talk about both assessment as well as enhancement। दोनों चीजें इसमें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए। देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। देखिए हमारा कोई एक प्रोग्राम है, मैंने बीई इन ट्रिपल ई लिया हुआ है, आप कुछ भी ले लीजिए, बीए इन हिस्ट्री ले लीजिए, एमए इन सोशियोलॉजी ले लीजिए, एमएससी इन केमिस्ट्री, कोई भी प्रोग्राम है। आपको बताया था कि असेसमेंट होता है नीचे से ऊपर, सबसे पहले सीओ इवैल्यूएशन करना होगा, फिर पीओ इवैल्यूएशन करेंगे, फिर पीईओ इवैल्यूएशन करेंगे। तो अब सीओ इवैल्यूएशन कैसे हो? उस प्रोग्राम के हर कोर्स के एंड पर, हर सेमेस्टर में 4 कोर्सेज, 5 कोर्सेज, 6 कोर्सेज आर देयर। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर you look at the average marks scored in the questions under that CO। CO1 का जो क्वेश्चन है उसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, दैट बिकम्स द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ CO इवैल्यूएशन। फिर उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट आएगा कोर्स एंड सर्वे से। स्टूडेंट से ही पूछिए, हर सेमेस्टर के खत्म पर हर कोर्स का टीचर स्टूडेंट से पूछे व्हाट डू यू फील, इस कोर्स का CO1 तुम्हारे अंदर कितना आया, हाउ मच डिड यू गेट CO2 इन यू, हाउ मच डिड यू गेट CO3, उसको एवरेज कर लीजिए। तो डायरेक्ट असेसमेंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द कोर्स एंड इनडायरेक्ट असेसमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स फीडबैक, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए इन अ रेशो 70% डायरेक्ट 30% इनडायरेक्ट, या 75% डायरेक्ट 25% इनडायरेक्ट, या 80-20। अब आप ये सोच रहे होंगे 70 30 75 25 कहां से आ गया? देखिए मेन बात यह है कि जो कुछ भी आप सेट कर रहे हैं दैट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर द गेम बिगिंस। कोर्स शुरू होते वक्त डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं डायरेक्ट को इतना वेट दूंगा और इनडायरेक्ट को इतना वेट दूंगा। ये नहीं कि आज जब रिजल्ट आ जाएगा देखेंगे, जब डायरेक्ट अच्छा हुआ तो उसको बढ़ा लेंगे और इनडायरेक्ट अच्छा हुआ तो नो नो नो, दैट इज चेंजिंग द गोल पोस्ट। गोल मार दिया फिर गोल पोस्ट वहां रख दिया, यहां से आप गोल हो गया, नो नो नो, यू हैव टू सेट द गोल पोस्ट फर्स्ट। पहले डिसाइड कीजिए डायरेक्ट विल हैव 75%, इनडायरेक्ट विल हैव 25 एंड स्टिक टू इट टुवर्ड्स द एंड। तो ये होगा सीओ इवैल्यूएशन। उस सीओ के क्वेश्चन में बच्चों ने कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज स्कोर किए, एवरेज ले लीजिए। CO1 का क्वेश्चन 1 था फॉर एग्जांपल, उसमें किसी बच्चे के 70 आए, 80 आए, 85 आए, सबका एवरेज ले लीजिए। वो CO1 का डायरेक्ट असेसमेंट हो गया। उसमें फिर इनडायरेक्ट असेसमेंट, उन बच्चों से फीडबैक लेकर उसका एवरेज ले लीजिए, बच्चे क्या कह रहे हैं। अब जो सीओ इवैल्यूएशन हुआ दैट बिकम्स द डायरेक्ट इवैल्यूएशन, डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द POs वेयर दैट CO इज मैप्ड। CO PO मैपिंग होगी कि भाई ये CO किस ग्रेजुएट एट्रीब्यूट या PO से मैप कर रहा है, तो वो उस PO का डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा CO का इवैल्यूएशन। ठीक है, ये डायरेक्ट कंपोनेंट। फिर आप लेंगे सर्वे, alumni survey, exit survey, ask from the alumni how much do you feel you have PO1 in you, PO2 in you, PO12 in you। ऐसे ही स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन उनसे एग्जिट सर्वे लीजिए, हाउ मच डू यू फील यू हैव गॉट PO1 in you, PO2 in you, PO3 in you and so on। इनडायरेक्ट इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स को मिला लीजिए इन अ प्री डिफाइंड रेशियो 70-30, 75-25, 80-20। डायरेक्ट ज्यादा रखा जाएगा, इनडायरेक्ट कम रखा जाएगा। जो PO इवैल्यूएशन बना दैट बिकम्स द इनडायरेक्ट, दैट बिकम्स द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ PO इवैल्यूएशन। इनडायरेक्ट कंपोनेंट कहां से आएगा? अगेन द alumni survey and the employer survey। ask from the employer such and such a student had graduated from our institute 5 years ago, how has he self developed,
उसके अंदर PEO1 कितना आ गया, PEO2 कितना आ गया, PEO3, लेट द एम्प्लॉयर से एवरेज ले लीजिए। इसी तरह वो एलुमनाई जो 5 साल पहले ग्रेजुएट करके गए हैं कम से कम, उनका फीडबैक लीजिए। ये एलुमनाई तो सब आएंगे, है ना, इसमें सिर्फ सीनियर एलुमनाई को लेंगे। अभी कल का जो हमारा लेक्चर है 9 बजे से, उसमें हम बात करेंगे मैनेजिंग एलुमनाई रिलेशंस, तो इस पॉइंट को और उसमें एम्फसाइज करेंगे। द एलुमनाई सर्वे हैज टू बी टेकन इन ऑर्डर टू डू द असेसमेंट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज। पीईओ का जो इवैल्यूएशन है, दैट बिकम्स द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ विजन ऑफ मिशन। इनडायरेक्ट कंपोनेंट में आप फीडबैक लीजिए स्टेक होल्डर्स से, दैट बिकम्स द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ विजन अटेनमेंट। इनडायरेक्ट कंपोनेंट में फिर आप फीडबैक लीजिए रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स से। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ये तो हुई असेसमेंट की बात। अब असेसमेंट तो कर लिया, यू हैव मेजर्ड, अब नेक्स्ट चीज है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग के लिए अचीव्ड सीओ हैज टू बी कंपेयर्ड विद टारगेट सीओ। इसीलिए देखिए यहां पर प्लस माइनस है कि क्या डिफरेंस रह गया। यहां पर तो सब जगह प्लस प्लस था, देखिए यहां प्लस प्लस था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप ऐड कर रहे थे, है ना। यहां पर आप उनका डिफरेंस ले रहे हैं, टारगेट सीओ से कितना पीछे रह गए। ऐसे ही टारगेट पीओ से अचीव पीओ, हाउ मच डिड इट लैक। टारगेट पीईओ से अचीव पीईओ, हाउ मच बिहाइंड हैज इट बीन। ये डिफरेंसेस को यहां पर आपने ऐड किया। फिर प्रपोज इंप्रूवमेंट, कैसे करेंगे प्रपोज वो आगे मैं बताऊंगा, बट ओबीई एडमिन डज इट। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रन द सेम प्रोग्राम, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बेटर प्रोग्राम। और नेक्स्ट टाइम ये जो डिफरेंसेस होंगे ना, ये डिफरेंसेस जो हैं, ये डिफरेंसेस और कम हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और कम हो जाए। डे वुड कम व्हेन यू विल रीच योर टारगेट, तब आप बार रेस कर लीजिएगा, टारगेट थोड़ा और ऊपर ले जाइएगा। ट्राई टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फर्दर। शुरू में ही बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे, बहुत ज्यादा ऊपर टारगेट रख देंगे तो डिप्रेशन होने लगेगा। आप ये कहें कि साहब वो हाई जंपर का रिकॉर्ड तो इतना है, पहली बार में इतना क्यों नहीं रख लिया, भाई ना क्रॉस कर पाता तो डिप्रेस हो जाता, है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करते जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें असेसमेंट भी है और व्हाट मेजरमेंट भी है और कंट्रोल भी है। अब ये समरी है ऑफ असेसमेंट मेथड्स, मुझे छोड़ देते हैं। देखिए डायरेक्ट में कोर्स परफॉर्मेंस है, इनडायरेक्ट में प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, हायर स्टडीज रिकॉर्ड ले सकते हैं, अलुमनाई सर्वे तो खैर मैंने बता ही दिया। और इनडायरेक्ट असेसमेंट टूल्स में कोर्स आउटकम फीडबैक, एग्जिट स्टूडेंट फीडबैक, अलुमनाई फीडबैक, इंडस्ट्री फीडबैक, दोनों तरह का, इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग का भी और जॉब्स का भी। फिर इंटरनेशनली नेशनली नॉर्म्ड एग्जामिनेशंस, गेट, नेट, कैट, जीआरई, आईएलटीएस, टोफल, इन सबको भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी लेना है, टेक इट बिफोर द गेम बिगिंस, ये बॉटम लाइन है। जो भी एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, टेक इट बिफोर द गेम बिगिंस। अब आइए इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये भी जो मैंने बताया था ना इस फिगर में, ये चीज प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट की बात जो मैंने की थी यहाँ पर, ये प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट है ना, ये कैसे हो ताकि वो गैप कम हो। 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। क्यूरिकुलर इम्प्रूवमेंट्स, या तो क्यूरिकुलम को इम्प्रूव कर दीजिए, एक डायमेंशन हुई, या कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट को इम्प्रूव कीजिए, दिस इज द सेकंड डायमेंशन। और थर्ड डायमेंशन है रिवाइज और रीडिफाइन द पीओस। गैप नहीं कम हो पा रहा है, इसका मतलब टारगेट बहुत ऊपर रख दिया है, तो टारगेट थोड़ा नीचे कर लीजिए। डोंट लेट देम गेट डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, आप अपना टारगेट नीचे कर लीजिए। तो ये 3 डायमेंशनल इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये ओबीई फ्रेमवर्क हुआ। देखिए ऊपर वाला सारा जो है ये इंस्टीट्यूट वाइड है, फिर ये ग्रीन वाले जो है ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है, पीईओ और पीओ, और सीओ इज कोर्स स्पेसिफिक। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट, असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट, है ना। इसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इनपुट और फीडबैक भी लेंगे, ठीक। तो एग्रीगेशन क्राइटेरिया ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, अब व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ पीओस। अगर पीओस को तीसरी डायमेंशन जो थी, एक थी क्यूरिकुलम इंप्रूवमेंट की, एक थी डिलीवरी एंड असेसमेंट की, तीसरी थी रीडिफाइनिंग पीओस। उसका प्रोसेस क्या हो, इज देयर अ नीड फॉर रीडिफाइनिंग पीओस। फैकल्टी का व्यू लीजिए, अलुमनाई सर्वे, ग्रेजुएट सर्वे, इंडस्ट्री, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, पीओज असेसमेंट।
If yes, improvement in PO attainment is a yes, then curriculum board of studies will do. Delivery methods and course outcomes module coordinator will do. और POs को ही change करना है तो program assessment committee will do, and department advisory board will finally accept or review, whatever the case may be. So this is the process. Everywhere the process has to be followed. बिना प्रोसेस फॉलो करे कोई भी काम आप करेंगे तो वो एक नीजर्क एक्शन होगा, एंड दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल. ठीक. व्हेन टू असेस पीईओ, जैसे मैंने भी बताया, फ्यू इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, 4 to 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन. प्रोग्राम आउटकम्स एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन. कोर्स आउटकम्स at the time of completion of every course in every semester. Redefining process of PEOs is similar to that of POs. Alumni survey, graduate survey, industry program coordinator, module coordinator, POs assessment, faculty views. Is there a need? Identify changes, curriculum, board of studies, regulations में change करने, academic council will do, or PEOs have to be changed, then either program assessment committee will do it and department advisory board will finally accept or may ask to review one time, second time, whatever. Finally, department advisory board will have to accept that PEOs. Okay. So that's all from my side. Thank you very much for your patient listening. Thank you, sir. If you have any questions. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, very Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And knowledge. Sir, Very please share good, the sir. PPT. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So if you have any questions, any doubts, Thank you, any sir. comments, please share. Sir, please share this PPT file. PPT I'll share with the admin. He'll distribute to all of you, right? Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप लोग, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. I Snehlata from Hindu Kanya College, Lucknow University, Lucknow. So my question is that generally I never seen every syllabus COPO is there or COPO mapping is there. So is it compulsory or not? नहीं, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे. बाकी लोग म्यूट हो जाइए, सिर्फ इनको बोलने दीजिए, है ना. बाकी रेस्ट एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यू कैन आस्क वन बाय वन. सो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया था, तो देयर इज अ कंपल्सरी टू सीओ. बट अभी मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, बट आई नेवर सीन द सीओस पीओस एंड मैपिंग इज देयर. और क्या ये कंपल्सरी है या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करती है, कॉलेजेस के पास नहीं होता है? क्या ये ऐसा कुछ प्रावधान है या सीओ पीओस कंपल्सरी है हर जगह? देखिए, कंपल्सरी तो पढ़ना पढ़ाना भी नहीं है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छी तरह पढ़ाएं, है ना. That is the point. When you are educating or you are teaching, you have to keep the quality in mind. Quality cannot be achieved unless and until, जैसे मैंने कहा ना, what you can't measure, you can't control. तो आप quality control you won't be able to do unless you measure them. तो अब measurement के कुछ parameters होने चाहिए. तो COs, POs are those parameters of quality in education. इसीलिए मैंने कहा outcome based education and quality assurance. That is the topic of my talk. आप बिना उसके पढ़ा दीजिए, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे के अंदर कितना गया, वो पता नहीं लगेगा आपको. All right? Okay, sir. Thank you so much. या. और कोई कमेंट? जी बताइए, हिमांशु साहब बताइए. Yes, sir. Very good morning. Sir, I am Dr. Himanshu Pandey from MM College, Modi Nagar. Sir, my question is regarding to your very beginning slide when you are talking about automaticity of institution. So, as a teacher, we only know that up to now we are able to only know that this institute have automation or this is automation नहीं, autonomous कह रहे हैं ना आप? Yes, sir. So autonomy. हाँ. Autonomy. Yes, sir. You are talking about 3 grade about it. So may we know something more about this? हाँ, देखिए, autonomy का मतलब ये होता है कि you are free to set up your own questions. You are free to evaluate them. ऐसा नहीं है कि आप किसी affiliated कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ही क्वेश्चन बताएगी, यूनिवर्सिटी ही COPO बताएगी, यूनिवर्सिटी में कॉपीज इवेलुएट होंगी.
अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन बन गए हैं तो आपको ये ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि हम खुद अपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस बना सकें अपने स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आईआईटीज आर ऑटोनमस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर ऑटोनमस। क्यों? वो चाहते हैं कि उनके बच्चे और ऊपर जाएं, तो वो और टफ क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चन सेट करना चाहते हैं। अब अगर एक जगह से सारे क्वेश्चन बन के आएंगे तो जाहिर है वो तो फिर खराब इंस्टीट्यूशंस को भी दिमाग में रखेंगे, अच्छे को भी रखेंगे, तो क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग नहीं आएंगे। तो ऑटोनॉमी का फायदा ये होता है कि आपके पास इंडिपेंडेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आप अपना सिस्टम खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा सर, इसमें आपने 3 ग्रेड बताया कि हाँ, 3 ग्रेड ऑटोमेसी होती है, तो सर Autonomy। उसके, यस सर तो उसके बारे में जरा सा, क्या अगर बहुत डीप ना टाइम ना हाँ। लगे तो बता सकते हैं? नहीं, देखिए मोटा मोटा ये है कि ग्रेड 1 ऑटोनॉमी में ये है कि आप अपने ऑन योर ओन आप कोई कोर्स स्टार्ट कर, कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यूजीसी में जाके उसका अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और ग्रेड 2 ऑटोनॉमी में ये होगा कि भाई ठीक है, आपको प्रोग्राम आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एकेडमिक काउंसिल, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कराना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा प्रिविलेजेस जो है वो ट्रिम डाउन होने लगती है जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स तो आप देख सकते हैं, वेब पर होंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप लोग हाँ, ओके जी जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। सर, एक्रेडिटेशन के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज हिंदी में। नहीं, एक्रेडिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी आपको वेल डिफाइंड पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करे, और वो इम्पार्शियल इवैल्यूएशन होना चाहिए। क्राइटेरिया पहले से बता दे कि इस क्राइटेरिया पे हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, और वो क्राइटेरिया जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए, है ना। 3 कीवर्ड्स थे वहां पर। एक्सटर्नल एजेंसी हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इम्पार्शियल हो यानी सब्जेक्टिविटी ना हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, और क्राइटेरिया वेल डिफाइंड हो। ओके, थैंक यू सर। Excuse me, sir. सर ग्रुप प्रताप साहब बताइए। I'm Harguru Pratap Singh from Government College. जी फायदा मैडम, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग मैडम। Yes. Okay. जी जी, बताइए जी। Good morning, madam. गो अहेड मिस्टर हरगुरु प्रताप। Hello, sir. First of all, thank you very much, Professor. Somebody was Sahab. asking a question. Yeah. Please go ahead. हाँ. Hello. Just hold on. हाँ, go ahead हरगुरु प्रताप। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आज के इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में हाउ टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Yes, a very good question, and that is what I started with. क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी है और क्वालिटी भी बढ़ानी है। ये आइडिया है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते रहे और क्वालिटी को वी पुश इट अंडर द कारपेट, है ना। राइट सर। क्वांटिटी जरूर बढ़ाइए लेकिन क्वालिटी के साथ। और प्राइवेटाइजेशन तो इसको और बढ़ावा देता है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ावा देता है। आप देखिए जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके यहाँ मास प्रोडक्शन भी और क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बनाया तो क्वालिटी गिर गई है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, राइट सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हेलो सर, माय क्वेश्चन इज। जी फहीम साहब। जी सर ब्लूम्स और एंडरसन की जो टैक्सोनॉमी है उसमें मेन डिफरेंस अगर आप बता दें एक बार। सिर्फ आखिर वाला जो क्रिएट जिसमें इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी आता है ना, वो वाला जो एक लेवल जो उन्होंने ऐड किया है, एनालिसिस सिंथेसिस को एक में क्लब कर दिया है और उसको क्रिएट को उन्होंने बढ़ा दिया है। थैंक यू। ठीक है, okay, so we'll stop questions here. If you have any questions you may note it. Tomorrow we are meeting again at 9. So what you can do, you can raise your questions tomorrow at 9. We'll take those questions first from today's lecture and then we'll continue our lecture for tomorrow, right? So just hold your questions back till tomorrow. Over to you. Okay, thank you. I can see some hands, but then that's right. Please join me. Thank you, sir. Thank you, sir. So Thank you, sir. we thank Prof Sufiyan for his time and for this valuable lecture.
as you know, it must have been told to you in his introduction, he's a very busy person. He's wearing several hats, and he always lends his time to our FIPs, both in his capacity as the principal of the engineering college, where he has great experience with the NBA accreditation, and also as the chairperson of the Alumni Affairs Committee. I've had the privilege of working with him, and it's certainly very enriching. So thank you, Professor Beg, for your time and for your lecture. And I'm sure there are more queries, because participants seem to be very, very sensitized. And you can either they can take up with you tomorrow, you're right, you're meeting them, or they can put it up on the Google Classroom, and we will include Professor Beg as one of the teachers, co-teachers on the classroom, and he will certainly oblige. So thank you very much. Have a good day. And participants, please come back in 15 minutes. Take care. Khuda. Okay, thank you. Okay. Thank you, All ma'am. the best. Thank you, ma'am. 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 Shukriya. Thank you, ma'am. So participants, I hope you all are fine. How is the course going? आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गूगल क्लासरूम आप सबने ज्वाइन कर लिया है? मैम हाँ बताइए जयप्रकाश जी, कुछ पूछना है? हाँ Ma'am, Namaskar, ma'am. We have Namaskar. joined the Google Classroom, but there is no any information on that Google Classroom. So, if any information is posted over there, kindly inform the. हाँ, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब गूगल क्लासरूम पे आपके असाइनमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगा. ठीक है? Thank you. Thank you. Okay. Okay. So take a break and please come back in 15 minutes.